गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब तक हम लोगों ने कौन सा कॉन्सेप्ट देखा था? तो हम लोगों ने अभी तक एडसॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन, सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शंस की जो बेसिक मैकेनिज्म्स है वो देखी। एडसॉर्प्शंस में हमें पता चला कि सरफेस फिनोमिनन है, और एब्सॉर्प्शन में हमें पता चला वो बल्क फिनोमिनन है। यानी वो जो ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट है या फिर लेयर का कॉन्सेप्ट है वो हम देख सकते हैं कि एडसॉर्प्शंस के केस में ऊपर की साइड पे रहेगा, एब्सॉर्प्शन में थ्रू आउट देखेगा। एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट का भी कॉन्सेप्ट हमने देखा, और हम लोगों ने देखा कि जब एडसॉर्प्शन हो रहा है तब वो सपाटी या फिर हम बोल सकते हैं कि उसका जो इंटरफेस है या फिर सरफेस है उसके ऊपर उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा, और एब्सॉर्प्शन में वो जो कॉन्सेंट्रेशन है थ्रू आउट सेम रहेगा। सॉर्प्शन हम किसको बोलेंगे? जब एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन साथ में चलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन किसको बोलते हैं? तो हम लोगों ने देखा था कि जब एडसॉर्प्शन होने के बाद उस जो एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि डिसॉर्प्शन। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने यहाँ तक का देखा था। अब हम लोग आगे वाले टॉपिक में जाएंगे और देखेंगे कि आज हम लोग ये चैप्टर में कौन सा नया टॉपिक करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग लेंगे मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शंस, उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शंस, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन, एज वेल एज वी विल गेट द कंपैरिजंस ऑफ दैट आल्सो। सो यहाँ पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग देखेंगे, और उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशंस का भी कॉन्सेप्ट और उसका रिकैप हम लोग करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द मैकेनिज्म्स ऑफ एडसॉर्प्शंस। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा था? तो एडसॉर्प्शन अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट the surface particle of the adsorbent are not in a same environment as the particle inside the bulk. Inside the adsorbent, all the forces acting between the particles are mutually balanced, but on the surface, the particles are not surrounded by the atoms or molecules of their kind on all the sides, and that is why they possess the unbalanced residual attractive force, and these forces of the adsorbent are responsible for attracting the adsorbent or adsorbate particles on its surface. Now, the extent of adsorption increases with the increase in the surface area as per the unit mass of the adsorbent at a given temperature and the pressure. So, यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग क्या चीज माइंड में सेट कर सकते हैं? तो हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट माइंड में सेट करके रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल के एडसॉर्प्शन जब भी हमें बोला जाएगा तो एडसॉर्प्शन कैसे राइज होगा? सो द सरफेस पार्टिकल्स of the adsorbent not in the same environment. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टारगेट करेंगे एनवायरमेंट ऑफ अ जो हमारा एडसोर्बेंट है उसका। तो एडसोर्बेंट के जो पार्टिकल्स है वो सेम एनवायरमेंट में नहीं है, यानी उसके जो पार्टिकल्स इनसाइड द बल्क है उसके पास सेम एनवायरमेंट है, लेकिन आउटसाइड जो है उसके पास सेम एनवायरमेंट नहीं है। इसका मतलब इनसाइड द एडसोर्बेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स आर म्यूचुअली बैलेंस्ड। वो बैलेंस था तो वहां पे कोई एडसॉर्प्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन सरफेस पे क्या हो रहा है? So on the surface, the particles are not surrounded by the same atoms or a molecule, and that is why they possess the unbalanced or the residual attractive forces. So this unbalanced attractive forces is responsible for the attractions. So we need to keep in mind here this one, that is the things. So the forces of an adsorbent are responsible for the attracting the adsorbate particles on its surface. So that is why we get the adsorptions. तो extensions कब मिलेगा, कितना मिलेगा? So extents of adsorptions increases with increase in the surface area per unit mass. यानी adsorbent का जितना हम लोग surface area बढ़ाएंगे उतना adsorptions बढ़ेगा at a given temperature and pressure. तो HTPP ये conditions हमें observe करने को मिलेगी. Now next one. तो नेक्स्ट में एडसॉर्प्शन मैकेनिज्म्स में हम लोग और क्या माइंडसेट कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फोकस ऑन द थिंग्स। अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट फीचरिंग द एडसॉर्प्शंस इज द हीट ऑफ एडसॉर्प्शंस। यानी अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हीट ऑफ एडसॉर्प्शंस यानी जो एडसॉर्प्शंस की फिनोमिना है उस टाइम पे हीट एडसॉर्ब हो रही है या वो लिबरेट हो रही है, यानी वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, वो वाला कॉन्सेप्ट आएगा। So during the adsorptions, there is always decrease in the residual forces of the surface,
and that is why there is a decrease in the surface energy which appears as a heat. So adsorption is therefore invariably an exothermic process. In other words, we can say that the delta H of adsorption is always negative. So when a gas is adsorbed, the freedom of a movement of its molecule becomes restricted, and this amount of a restricted or decrease in the entropy of the gas after the adsorption, that is delta S, is also negative. तो यहाँ पे ये चीज हमें फोकस करनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल एडसॉर्प्शन फिनोमिना में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? सो देयर इज अ डिक्रीज इन द रेसिडुअल फोर्सेस. रेसिडुअल फोर्स डिक्रीज हो रहा है, यानी उस डिक्रीज इन द सरफेस एनर्जी ऑल्सो डिक्रीज हो रही है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट this adsorption is nothing but an exothermic process. ये वाला कॉन्सेप्ट हमें थर्मोडायनेमिक के चैप्टर पे पता है. तो यहाँ पे हम लोग ये माइंड में सेट कर देंगे, डेल्टा एच ऑफ एडसॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव. व्हाई? बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर एंड वी आर नोइंग दैट जब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो वो एंडोथर्मिक बोला जाएगा, जब हमारे पास वैल्यू आएगी नेगेटिव तो वो क्या बोला जाएगा? वो एक्सोथर्मिक बोला जाएगा. सो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? सो व्हेन गैस इज एडसॉर्ब्ड, गैस क्या हो रही है? एडसॉर्ब्ड हो रही है. कहाँ पे? सरफेस पे. सो द फ्रीडम ऑफ दैट गैस ऑफ इट्स मॉलिक्यूल बिकम रेस्ट्रिक्टेड, यानी फ्रीडम उसकी कम हो रही है, यानी उसकी एंट्रोपी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. सो दैट इज व्हाई द डेल्टा एस इज आल्सो नेगेटिव. तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट आएगा वो हम लोग कैसे माइंड में सेट करके रखेंगे? तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये वाला कॉन्सेप्ट है कि जो गिब्स एनर्जी है दैट इज इक्वल टू जो हमारी एंथैल्पी है माइनस टी इंटू एस वाला कॉन्सेप्ट है, यानी टी इंटू एस वाला कॉन्सेप्ट है. तो हमारे पास मान के चलो जी, हमारे जी इज इक्वल टू, यहाँ पे एंथैल्पी चेंज मुझे मिला मान के चलो 2000 जूल माइनस अभी मैंने जो टेम्परेचर लिया था वो 100 केल्विन लिया है, इनटू अभी जो मेरा आंसर आया है जो एंट्रोपी चेंज है वो 2 है. तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? सो आई विल गेट जी इज इक्वल टू माइनस 2000 प्लस माइनस जो मेरे पास जी एस की जो वैल्यू थी वो वैल्यू क्या थी? तो मेरे पास वो एस की वैल्यू थी -2, यानी वो नेगेटिव थी. तो अभी हमें माइनस इंटू माइनस अभी क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा मेरा पॉजिटिव, यानी 100 into 2 that is 200 and minus minus that is plus. So what I will get? I will get the answer of minus 1800 joule. So I will get the answer of a G in negative, and that is why the adsorption is what? That is spontaneous at the lower temperature, because at that temperature the entropy of a gas get decreases. So this is the concepts and we need to focus on that particular things. So hope कि आपको ये वाला पता चल गया. यानी एडसॉर्प्शन मैकेनिज्म्स में क्या माइंड में रखना है? एडसॉर्प्शन अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन से, यानी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी. डेल्टा एच नेगेटिव आया यानी गैस का एडसॉर्प्शन बढ़ा, यानी उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गया, यानी उसकी एंट्रोपी कम हो गई, यानी वो नेगेटिव हो गया. अभी वो नेगेटिव हो गया यानी टी डेल्टा एस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. यानी हमारा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वाली जो फॉर्मूला है उसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आएगा. यानी हमारी जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट वन. So adsorption is thus accompanied by the decrease in the enthalpy as well as decrease in the entropy. यानी adsorption हुआ, enthalpy decrease हो गई और entropy भी decrease हो गई. For a process to be a spontaneous, the thermodynamic requirement is that at a constant temperature and pressure, delta H must be a negative. That is, there is a decrease in the Gibbs free energy that we have discussed earlier. Now next one, on the basis of the equations, that is delta H minus T delta S, it can be a negative if the delta H is sufficiently higher. Negative value as minus T delta S is positive. So negative and positive will get the negative answer if we have a sufficiently highly negative values. So thus in adsorption process, which is a spontaneous, a combinations of a two factor, that is delta G will be a negative. As the adsorption proceeds, delta H becomes less and less negative. Ultimately, delta H becomes
equal to the T delta S and the delta H becomes 0. So at this state the equilibrium is attained. So यहाँ पे हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट याद रखना है? So adsorption जब भी बोला जाएगा हमें ये चीज माइंड में रखनी है. Decrease in the enthalpy as well as decrease in the entropy is observed. For a spontaneous process हमें thermodynamics requirement क्या है? So thermodynamic requirement ये है at constant temperature and pressure delta H. तो जो डेल्टा जी वाला जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने क्या यहाँ पे माइंड में रखा? तो हम लोगों ने ये माइंड में रखा कि जो डेल्टा जी वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्या होना चाहिए? मस्ट बी अ नेगेटिव. ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखा. अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लेंगे? हम लोग ये फॉर्मूला लेंगे जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. सो डेल्टा जी कैन बी ए नेगेटिव. कब वो नेगेटिव आएगा? तो वो जब नेगेटिव आएगा उसका मतलब ये हो गया डेल्टा जी कैन बी ए नेगेटिव. कब? जब डेल्टा एच सफिशिएंटली हाईली नेगेटिव होगा एज कंपेयर टू दी माइनस टी डेल्टा एस इज पॉजिटिव. उसका मतलब क्या हुआ? इन एडसॉर्प्शन प्रोसेस which is a spontaneous, so we have a two factors which makes the delta G negative. First one, as the adsorptions proceed the delta H becomes less and less negative. So यहाँ पे एक फोकस करना है. पहले हमारे पास क्या था? जब हमारे पास ये हाईली सफिशिएंटली नेगेटिव था ये वाला कॉन्सेप्ट, अब वो क्या हो गया? हाई से वो उसकी वैल्यू कम होती गई, लेस एंड लेस नेगेटिव हो गया. अल्टीमेटली हमें क्या मिला? Delta H becomes equal to the T delta S, and that is why delta G becomes a zero and such a state that is equilibrium is attained. यानी adsorption की प्रोसेस कब तक चलेगी? तो जब तक हमारे पास डेल्टा H जो सफिशिएंटली हाई था वो लोअर होते होते T डेल्टा S की कंपेयर में आ गया, यानी दोनों की वैल्यू प्लस और माइनस होके जीरो हो गए, तो डेल्टा G जीरो हो गया और वो इक्विलिब्रियम में आ गया. तो ये कॉन्सेप्ट जब होगा तब तक हमारा एडसॉर्प्शन फिनोमेना चलने वाला है. नाउ द नेक्स्ट वन. Now the types of adsorptions. So types of adsorptions, we have two types of adsorptions, that is the physical adsorption as well as the chemical adsorptions. So then we have two types of adsorptions of a gas on solid. If the accumulations of a gas on the surface of a solid occurs on account of a weak van der Waals forces, so the adsorption is termed as the physisorption. While gas molecules or atoms are held together on a solid surface by a chemical bond, then it is termed as the chemical adsorption or the chemisorption. So यहाँ पे जो माइंड में रखना है वो ये है, अगर हमारा एडसॉर्प्शन वान डर वाल्स के बेसिस पे हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल एडसॉर्प्शन या फिजिसॉर्प्शन, और हमारा जो एडसॉर्प्शन है वो केमिकल बॉन्डिंग के बेसिस पे हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे केमिकल एडसॉर्प्शन और द केमिसॉर्प्शन. So chemical bonds may be a covalent or ionic in nature, and the chemical or chemisoptions involves the high energy of activations and is therefore often referred as the activated adsorption. So यहाँ पे ये माइंड में सेट रखना है, फिजिकल एडसॉर्प्शंस में एनर्जी कम चाहिए थी यानी एक्टिवेशन एनर्जी लो चाहिए थी, लेकिन केमिकल में केमिकल बॉन्ड हो रहा है इसलिए उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसलिए हम उसको बोलेंगे एक्टिवेटेड एडसॉर्प्शंस. Sometimes the two processes occur simultaneously and it is not easy to ascertain the types of the adsorption. So physical adsorptions at a lower temperature may pass into the chemisorptions as the temperature increases. For example, if we have a dihydrogen is first absorbed on the nickel by the van der Waals, so the molecules of a hydrogen then dissociate to form the hydrogen atoms which are held on a surface by the chemisorption. तो यहाँ पे बहुत अच्छी एक चीज जो है वो हमें कॉन्सेप्चुलाइज करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल we can't make adsorptions as a part. हम लोग उसको easily judge नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये common चीज है. Physical adsorptions can occur at low temperature, may pass into the chemisorptions as the temperature get increases. यानी lower temperature पे जो हमारी reactions physisorptions दिखा रही थी अभी वो temperature बढ़ते बढ़ते high temperature में चला जाएगा, यानी वो physical adsorptions से वो chemical adsorptions में convert होता जाएगा. Now
हमारे पास ये एग्जांपल है, सपोज हमने डाइहाइड्रोजन को निकल पे एडसॉर्ब करवाया था, तो पहले वांडर वाल्स था, तो वांडर वाल्स फोर्सेस से वो फिजिकल एडसॉर्प्शन था. नाउ दिस हाइड्रोजन गेट डिसोसिएटेड and form the hydrogen atoms which are held together on a surface by the chemisubstance, that is the hydrogen bond is formed. So this is the concepts when we can say the physical adsorptions may converted into chemical adsorptions on the basis of increase the temperature. So lower temperature पे हमारे पास जो भी concept है वो physical के basis पे था, अब हमारा वो concept क्या हो गया, chemical adsorptions के basis पे आ गया. Now the next one. Now the characterizations of the physics-options. So physics-options का first of all criteria क्या है, that is lack of specificity. So lack of specificity यानी उसकी जो specificity है, या हम लोग बोल सकते हैं वो कहीं पे भी कभी भी reactions देगा, वो किसी के लिए किसी भी particular gas के लिए specific नहीं है. So a given surface of an adsorbent does not show any preference for a particular gas as the van der Waals forces are the universal. Now next one, nature of adsorbent. So the amount of gas adsorbed by the solid depends on the nature of gas. In general, easily liquefiable gases that having the higher critical temperature are readily adsorbed as the van der Waals forces are stronger near the critical temperature. For example, 1 gram of activated charcoal adsorbs more sulfur dioxide than the methane, which is still more than 4.5 ml of the hydrogen gas. So यहाँ पे नेचर का कॉन्सेप्ट है. थर्ड वाला कॉन्सेप्ट है रिवर्सिबल नेचर. सो फिजिकल एडसॉर्प्शंस ऑफ ए गैस बाय अ सॉलिड इज जनरली रिवर्सिबल एंड दस वी कैन से दैट सॉलिड प्लस गैस जब होगा तब वो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा गैस और लिक्विड प्लस हीट. यानी हीट इवॉल्व होगी तो फॉरवर्ड, हीट एब्सॉर्ब होगी तो वो रिवर्स रिएक्शन शो करेगा. सो मोर of a gas is absorbed when pressure is increased as the volume of gas get decreases according to the Lee-Cadell principle, as well as so gas can be removed by decreasing the pressure. Since the adsorption process is exothermic, the physical adsorption occurs readily at the low temperature and decreases with increase in the temperature, that is the Lee-Cadell principle. तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फोकस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी. यानी ये जो एडसॉर्प्शन है वो पर्टिकुलर गैस के लिए नहीं है, does not show any preference for the particular gas because the van der Waals is universal. Now nature of adsorbent. So हम लोग क्या बोलेंगे, नेचर पे डिपेंड करेगा, या इट इज ट्रू, depend on the nature of gas. So we can say that easily liquefiable gas gives, or which having the higher critical temperature get absorbed readily as the van der Waals forces are universal. Or we are knowing that the van der Waals forces are strong enough at the nearer to the critical temperature. So according to this concept, we can say that 1 gram of activated charcoal absorb more sulfur dioxide. Why? Because the critical temperature of SO2 is higher, that is 630, than that of the methane because it having the 190 Kelvin. So which is still more than that of the dihydrogen because the critical temperature of dihydrogen is 33. Now the reversible nature, we can say that, so physical adsorption is occurred at the lower temperature, so we'll get the reversible in nature. So this is the figure or the equations when we can say that when the heat is about to release, that is the exothermic, then we have the forward reactions, and when it is absorbed, then it is the reversible. So more of a gas can be absorbed when the pressure is increased as the volume get decreases according to the Lee-Cadell principle. Also we can say that so gas can be removed by decreasing the pressure. Since the adsorption is exothermic in nature, so we can say that the physical adsorption occurs readily at the lower temperature and decreases with the increase in the temperature. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या फोकस किया, तो हम लोगों ने ये फोकस किया कि फिजिकल एब्सॉर्प्शंस कोई भी पर्टिकुलर गैस के लिए स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि van der Waals यूनिवर्सल है. सेकेंड हम लोगों ने देखा नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट, यानी नेचर कैसा होना चाहिए जो इजीली लिक्विफाइबल. इजीली लिक्विफाइबल के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, तो हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट है
जिसके पास वांडरवाल्स फोर्सेस ज्यादा है, यानी जिसका टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसके पास लिक्विफिकेशन ज्यादा है, यानी वो ज्यादा एब्सॉर्ब करेगा। रिवर्सिबल नेचर में हम लोग क्या करेंगे, तो रिवर्सिबल नेचर में हम लोगों ने ये देखा कि लोअर टेम्परेचर पे हमारे पास क्या मिलेगा, रिवर्स जो रिएक्शंस है वो एक्सोथर्मिक होगी। तो टेम्परेचर जब कम होगा तो रिवर्सिबल रिएक्शंस में हमें फॉरवर्ड मिलेगा, टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ाएंगे तो हमें रिवर्स मिलेगा, यानी एडसॉर्प्शन कम हो जाएगा। यानी गैस के लिए हम लोग देखेंगे तो प्रेशर हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या होगा, लिक्विफाइबल ज्यादा होगा और उसके बेसिस पे हमें एडसॉर्प्शन ज्यादा मिलेगा। साइमल्टेनियसली हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा, एडसॉर्प्शन ज्यादा मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट्स हमें यहाँ पे फोकस करके रखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टराइजेशन है फिजिकल एडसॉर्प्शंस की, वो है सरफेस एरिया एज वेल एज द एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शंस। तो उसमें हम लोग क्या फोकस करेंगे, सो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शंस इंक्रीजेस with the increase of a surface area of an adsorbent, and thus finely divided metal and the porous substance having the larger surface area are good adsorbent. And second one, that is the enthalpy of adsorptions. So here we have a no doubt regarding the physical adsorptions, which is exothermic process, but its enthalpy of adsorption is very quite low, that is approximately 20 to 40 kilojoule per mole. So this is because the attractions between this gaseous molecule and the solid surface is only due to the weak van der Waals forces. तो यहाँ पे हमें क्या चीज माइंड में रखनी है, as the surface area increases the adsorptions get increases, and that is why instead of having the solid as a block, we require to get converted that particular block into the finely divided portions, and that is why it having the more surface area, and due to that reasons we have a more surface area and ultimately more adsorptions. Also the porosity get increases, and that is why also it will accommodate the certain material to adsorb over that particular area. ऑल्सो वी कैन से दी एंथैल्पी, एंथैल्पी के केस में क्या है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी एंथैल्पी हमारी लो इनफ होनी चाहिए, यानी टेम्परेचर या फिर एंथैल्पी जितनी कम होगी उतना हमारा क्या होगा, उतना हमारा फिजिकल एडसॉर्प्शन बढ़ने वाला है। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिसॉर्प्शंस। सो केमिसॉर्प्शंस की जो कैरेक्टराइजेशन है उसमें हम लोग क्या फोकस करेंगे, उसमें हम लोग फोकस करेंगे हाई विच इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। सेकेंड हम लोग फोकस करेंगे इरिवर्सिबिलिटी। थर्ड हम लोग फोकस करेंगे सरफेस एरिया, एंड फोर्थ हम लोग फोकस करेंगे एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाई स्पेसिफिसिटी, तो फिजिक्स ऑप्शंस में हम लोगों ने देखा था वो स्पेसिफिक नहीं है, यानी यहाँ पे लो, वहां पे लो स्पेसिफिसिटी थी, यहाँ पे हाई स्पेसिफिसिटी मिलेगी, यानी केमिस ऑप्शन इज हाईली स्पेसिफिक and it will only occur if there is some possibility of a chemical bonding between the adsorbent and adsorbate. Say for example, oxygen is absorbed on the metal by the virtue of a oxide formation, as well as we can take the hydrogen is absorbed by the transitions metal due to the hydride formations only. फिर हम लोगों ने देखा था फिजिकल एडसॉर्प्शंस में कि वो रिवर्सिबल था, यहाँ पे इरिवर्सिबल होगा, यानी केमिकल chemisoptions involves the compound formations, and that is why they are usually irreversible in nature. Also, it is the exothermic process, but the process is very slow at the low temperature on account of its requirement of high energy of activation. So that is why we can say that at lower temperature we get the first of all the physisorptions, and on increasing now it will be converted into the chemical adsorptions, and that is why at low temperature we get the physical adsorptions. Now on the increasing the temperature we get the high or the chemical adsorptions. So like most of the chemical changes, the adsorptions often increases with the rise in the temperature. So physisorptions of a gas adsorbed at the low temperature may changes to the chemical adsorptions at a high temperature. So usually the high pressure is also favorable for the chemisorption. यानी हमें ये माइंड में रखना है कि फिजिकल एडसॉर्प्शंस में जो रिक्वायरमेंट है उससे पूरी अलग या फिर ऑपोजिट कंडीशंस यहाँ पे केमिकल के लिए फेवरेबल रहेगी। सरफेस एरिया वाले केस में यहाँ पे सेम रहेगा, एज दी सरफेस एरिया इंक्रीज
As the surface area get increases, we get increase in the what, we get increase in the physical adsorptions. तो यहाँ पे हम लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शंस की भी चर्चा करेंगे। तो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शंस में हमें क्या मिलेगा? तो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शंस में हमें मिलेगा एंथैल्पी ऑफ केमिसॉर्प्शंस इज हाई, that is 80 to 240 kilojoule per mole, as it involves the chemical adsorptions or the chemical bond formation is takes place. Now moving on the next topic, that is how we will correlate that particular portions in the example part. Now the comparisons part. In comparisons part, we can say that first of all, in case of physics options, what we have, it is occurred due to the van der Waals forces. Now in chemist options, we can say that it is obtained due to the chemical bond formations. Physics options is not specific in nature, while in case of chemist option, it is specific in nature. Physics option is reversible, while the chemist option is irreversible. Both will depend on the nature of gas, but in case of the uh, physics options, it is depend on the liquefactions of a gases, while in case of the chemist options, it depends on the how the reactant or how they will react with the adsorbent. Now in case of physics options, enthalpy of adsorption is very low, and in case of the chemist options, the enthalpy of adsorption is very high. On next topic, we can say that at the lower temperature, in case of the physics options, we can say that the lower temperature is favorable for the physics options, while the higher temperature is favorable for the chemist options. So we can say that by the decrease with the increase, so physics options get decreases with the increase of a temperature, while in case of the chemist options, it increases with the increase of a temperature. Now, in case of physics options, no appreciable activation energy is required, while in case of chemist option, high activation energy is required. Now, in case of the physics options, it depends on the surface. It also, in chemist options, it also depend on the surface area. So it is not the difference, but it is the requirement, that is both require the same requirement. Now the it results into the multi-molecular layer in case of the physics options, while chemist options results into the unique molecular layer. So ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये हमें यहाँ पे, यानी जो आपके बुक में जो आपको डिफरेंस दिया गया है, वो आपको माइंड में सेट करके रखना है. Now moving on the next, now we will discuss the certain portions of revisions or the recap sections. So let's have a recap what we have discussed till now. This means that first, the material appears on the surface of the adsorbent and then passes into its bulk. When the two processes occur simultaneously, it is known as sorption. Dyeing fiber is an example of sorption. Dyes get absorbed as well as absorbed on cotton fibers. Let us now look at the thermodynamic aspect of adsorption. Adsorption is accompanied by a decrease in the residual forces of the surface. This implies that some energy is released when the molecules of the adsorbate get attracted to the surface of the adsorbent. That is, the change in enthalpy, delta H, is negative for the process. Also, the degree of freedom of the adsorbate decreases upon adsorption, which means the change in entropy, delta S, is also negative for the process.
process to be spontaneous, the Gibbs free energy change delta G must be negative. The Gibbs equation is delta G is equal to delta H minus T delta S. So delta G can be negative if delta H is sufficiently negative, since minus T delta S is positive for the process of adsorption. When delta H becomes equal to T delta S, or when delta G becomes zero, the adsorbate and the surface reach a state of dynamic equilibrium. You know that the accumulation of molecular species on the surface of a solid or liquid, resulting in a higher concentration of the molecules on the surface, is known as adsorption. Adsorption of gases on solids can be of two types: physical adsorption and chemical adsorption. Let us discuss physical adsorption first. When gas molecules or atoms are held to the surface of a solid by weak van der Waals forces, then it is called physical adsorption. Physical adsorption is also known as physisorption or van der Waals adsorption. Let's look at an example. In the adsorption of dihydrogen on the surface of finely divided platinum, hydrogen molecules are first attracted towards the surface of platinum by weak van der Waals forces, absorbed due to the presence of unbalanced attractive forces or free valencies on the metal surface. This is physical adsorption. Here, platinum is the adsorbent and dihydrogen molecules the adsorbate. Note that there is no chemical bonding between the adsorbent and the adsorbate. Thus, we can also say that physical adsorption occurs when a gas accumulates on the surface of a solid by van der Waals forces without the formation of a chemical bond between the adsorbate and the adsorbent. Now let us discuss chemical adsorption. Chemical adsorption or chemisorption is defined as the phenomenon that occurs when gas molecules or atoms are held to the surface of a solid by chemical bonds. In the example of dihydrogen and platinum, on increasing the temperature, the adsorbed dihydrogen molecules on the surface of platinum dissociate into hydrogen atoms. These hydrogen atoms are held strongly by platinum through chemical bonds. The chemical bond can be ionic or covalent in nature. In some cases, both physical and chemical adsorption may take place at the same time, and it may not be possible to identify the types of adsorption. The basic characteristics of adsorption depend on the specificity of the adsorbent, nature of the adsorbate, reversibility of the process, enthalpy of adsorption, activation energy, layers of adsorption, and surface area of the adsorbent. Let us discuss how each of these characteristics affects physical and chemical adsorption. In physical adsorption, the surface of the solid or the adsorbent has no specific preference for any type of gas molecules or the adsorbate, because the van der Waals forces that act on the adsorbent and the adsorbate are universal. However,
Chemical absorption is highly specific and will occur only when an ionic or covalent bonding is possible between the adsorbent and the adsorbate. Therefore, we can infer that while physical absorption is not specific in nature, chemical absorption is highly specific. The amount of gas absorbed by the adsorbent also depends on the nature of the gas or the adsorbate. Different gases are absorbed to different extents by the same adsorbent at the same temperature. For example, at 288 Kelvin, 1 gram of charcoal absorbs 380 cc of sulfur dioxide, 16.2 cc of methane, and only 4.5 cc of hydrogen. The volumes of sulfur dioxide, methane, and hydrogen are reported at STP conditions. It can be seen from the critical temperature values that higher the critical temperature of the gas, the greater is the extent of absorption. This is because gases that can be easily liquefied have high critical temperatures and are more easily absorbed. This can be attributed to the fact that the van der Waals forces are strong in the range closer to the critical temperature of that gas. The critical temperature of a gas is defined as the temperature above which the gas cannot be liquefied, however high the pressure applied. It can be seen that the volume of the absorbed gas increases as the critical temperature increases. The critical temperature of sulfur dioxide is 430 Kelvin, and hence it is absorbed more on charcoal than methane and hydrogen, which have a critical temperature of 190 and 33 Kelvin respectively. In chemical absorption, no correlation is seen between the amount of gas absorbed and the critical temperature of the gas. But absorption depends on the chemical nature of the gas. The greater the reactivity of the adsorbate, the greater is the amount of absorption. Therefore, we can infer that both physical and chemical absorption depend on the nature of the adsorbate. Let us now discuss the reversible nature of the process. Like any other equilibrium, adsorption is a process involving true equilibrium, with adsorption on one side and desorption on the other. The two opposite processes include the adsorption of gas molecules on the surface of a solid and desorption of gas molecules from the surface of a solid into the gaseous phase. You know that adsorption is an exothermic process. The equilibrium can be represented as gas. The adsorbate plus solid. The adsorbent is in equilibrium with the gas absorbed on the solid plus heat. On a Planck-Lechatier's principle, it can be seen that when we increase the pressure or decrease the temperature, the equilibrium shifts forward. That is, adsorption increases. Similarly, when we decrease the pressure or increase the temperature, the equilibrium shifts backwards. That is, adsorption decreases. In other words, desorption takes place. For example, 1 gram of charcoal absorbs about 10 cc of nitrogen at 273 Kelvin, 20 cc at 244 Kelvin, and
45 cc at 195 Kelvin. It is observed that absorption of nitrogen on charcoal decreases with an increase in the temperature. Thus, we can say that physical absorption is a reversible process due to the presence of weak van der Waals forces of attraction. However, during chemical absorption, chemical bonds are formed between the absorbate and the absorbent molecules. For example, when oxygen is chemically absorbed on carbon. To reverse this process, there is a need to free the absorbed gas. However, the reverse process releases carbon monoxide or carbon dioxide instead of oxygen. Hence, chemical absorption is irreversible in nature. Therefore, we can conclude that while physical absorption is a reversible process, chemical absorption is irreversible. Next, let us discuss the enthalpy change associated with physical and chemical absorption. In physical absorption, since the van der Waals forces of attraction are weak, the heat evolved, or the enthalpy of absorption, is very little, around 20 to 40 kilojoules per mole. Chemical absorption is also an exothermic process. However, in chemical absorption, surface compounds form, and the forces involved are similar to chemical bonds. Thus, a relatively high amount of heat is evolved, about 80 to 240 kilojoules per mole. Therefore, we see that the enthalpy of physical absorption is low, whereas the enthalpy of chemical absorption is very high. Let us now discuss the activation energy required for absorption. Activation energy is the minimum energy required to convert reactants into the respective products. Physical absorption involves only weak van der Waals forces and does not involve the formation of surface compounds or any chemical bonds. Therefore, it does not require activation energy. However, as chemical absorption involves the formation of surface compounds, activation energy is required for the formation of chemical bonds between the absorbent and the absorbate. A gas may be physically absorbed at low temperature, but absorbed at high temperature. During absorption of hydrogen or nickel at low temperatures, hydrogen is physically absorbed on nickel. However, at high temperatures, hydrogen gets chemisorbed on the surface of nickel. In other words, an increase in the temperature supplies the necessary activation energy for the formation of surface compounds, and the process is called activated absorption. We can therefore conclude that physical absorption requires no appreciable activation energy, while chemical absorption requires high activation energy. Let us look at the type of molecular layers that are formed during physical and chemical absorption. Layers of gas molecules are absorbed one over another by van der Waals forces in physical absorption. That is why multimolecular layers are formed under high pressure in physical absorption. In chemical absorption, a
A chemical bond is formed with the molecules that come in direct contact with the surface of the adsorbent. Hence, only a unimolecular layer is formed in chemical adsorption. Therefore, multimolecular layers are formed in physical adsorption, but only a unimolecular layer is formed during chemical adsorption. Let us now look at the impact of the surface area of the adsorbent on physical and chemical adsorption. The greater the surface area, the greater the adsorption. Therefore, substances with porous structures are good adsorbents. Charcoal is a good adsorbent as it has a porous structure. For both physical and chemical adsorption, the extent of adsorption increases with an increase in the surface area of the adsorbent. सो हम लोगों ने यहाँ तक का देखा और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट की डिस्कशन करेंगे. सो तब तक के लिए ये वीडियो आप देखते रहो. थैंक यू.